I have had the opportunity to appear before the House, before the upper house now. देखिए, दो चीज़ें मैं हिस्टोरिकली आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. एक तो 2017 के अंदर जब PMLN की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे. उस वक़्त बड़ी क्लैरिटी के साथ नेट मीटरिंग की सिस्टम जो था वो उसी वक्त उसका आगाज़ हुआ था और पिछले 5-6 सालों में इसकी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत हेल्दी तौर तरीके से एक अच्छी ग्रोथ हुई है. इसमें आज तक पाकिस्तान के अंदर 1500 and some megawatts of power की capacity has been invested into by people themselves. There are more than 113,000 solar net metering connections across the country. और पिछले 2 सालों के अंदर ओवर 100% से these have been actually growing. इंटरनेशनल सोलर पैनल्स की मार्केट के अंदर there has been a serious supply और एक गलट आया है जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमतें बिल्कुल नोज डाइव की है. 110-115 रुपीस पर वॉट की जो सोलर पैनल की कीमत होती थी आज से 2 साल पहले, वो आज तकरीबन 45 रुपए पे आ चुकी है. इन्वर्टर्स, फ्रेम्स, हर चीज़ की कीमत लगाएं तो आज सोलर इन्वेस्टमेंट की करना एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को. आप प्लीज़ रिकॉर्ड सामने उठाएं. ऑनरेबल मेंबर ने जो ये क्लेम किया है कि हुकूमत कह रही है या हुकूमत की पॉलिसी ये है और कन्फ्यूजन मची हुई है, इसमें कितनी बात दुरुस्त है. मैं किसी को जी खुदा न खासा डिसरिस्पेक्टफुली बात ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि आज तक पिछले 2 महीने में जब से हुकूमत आई है, एक दिन भी किसी भी पॉलिसी मेकर ने ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो इस पावर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किस दिन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या ख़त्म करने लगे हैं? किस दिन ये बात हमारी तरफ से आई? ये अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आना शुरू हुए. आपने IMF को नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग के साथ जी रिप्लेस करने की कमिटमेंट दी है. IMF के साथ हमारी डिस्कशंस के अंदर ये चीज़ें फिगर आउट ही नहीं करती. IMF के साथ गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट रह गई है और आज भी है, और IMF से ज़्यादा हमारे अपने साथ है कि सर्कुलर डेट के अमाउंट को हम 2310 मिलियन रुपीस से ऊपर पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को ऊपर नहीं जाने देंगे. दैट इज़ इट. उसके अलावा हमने IMF के साथ जो इंगेजमेंट की है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 3 हफ्ते के अंदर एक्सटेंसिव मीटिंग्स होल्ड करके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो हमने प्रपोज किए हैं उनकी हमने उनको इंट्रोड्यूस किया कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में ये पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स अगले 5 साल के अंदर करने का इरादा रखते हैं. ट्रांसमिशन का कंस्ट्रेंट ख़त्म करेंगे तो 2 रुपये यूनिट की कमी आएगी. अगर इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल पे हम ट्रांजिशन करेंगे तो उसकी 4 रुपये यूनिट की कमी आएगी. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ या बेटर मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो उसका 6 रुपये यूनिट का इफेक्ट आएगा. तो हमने इन तमाम चीज़ों को असेस करके उनको सामने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूर बात की, और हमारा हक है. और हम न सिर्फ वहाँ करते हैं बल्कि हम पब्लिक डोमेन के अंदर भी ओपनली ये बात करते हैं. तो मैं आपको इस हाउस को अश्योर करवाना चाहता हूँ. मैंने परसों या कल, आई थिंक इट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, आई मेड अ क्लियर statement in a press conference in Lahore also that has been reported in the Dawn yesterday. And in spite of that report, there were still anchors and people on the electronic media last evening who were just claiming out of nowhere from information just roaming around in thin air that we are planning to discourage or we are planning to hurt the interest of the existing investors. हमने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमारा एक तो राइट ही नहीं बनता. जितने भी सोलर के नेट मीटरिंग के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने, चेयरपर्सन साहिबा, उन्होंने क्लियरली नेपरा के साथ एक लाइसेंस साइन किया है
کسی کا 7 سال کا ہے, کسی کی ابھی ڈیوریشن 5 رہ گئی ہے, کسی کی 4 رہ گئی ہے, اس میں وی آر کمپلیٹلی کمیٹڈ کہ ہم انہی ریٹس کے اوپر خرید و فروخت کریں گے جس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ سائن آف کیا ہے. باقی رہ گئی بات کہ آئندہ کیا ہوگا. اس وقت ہم کسی پوزیشن میں نہیں ہیں بات کرنے کہ آئندہ کیا ہوگا. جب ہم نے خود اپنی فائنینشیل ماڈلنگ نہیں رن کی, جب ہم نے اپنے بیٹھ کے نہیں دیکھا کہ ہمارے سسٹم کے اوپر اس کا ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ کیا آ رہا ہے, اس کے لیے انفراسٹرکچر کیا ضرورت ہوگا, جب یہ انشاءاللہ 1500 میگا واٹ 4500 میگا واٹ پہ پہنچے گا ہماری پالیسیز کی وجہ سے, جب رینیوبلز کی پازیٹیو پالیسیز کی وجہ سے یہاں تک پہنچے گا, تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہوں گی. یہ جو اپر کلاس کے لوگ انویسٹمنٹس اس میں کریں, بہت اچھا کر رہے ہیں, ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. اس کا لائف لائن کنزیومرز اور پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے ٹیرف کے اوپر کیا ریٹ کا اثر پڑے گا. آج سے 2 سال پہلے جب کوئی انویسٹ کرتا تھا ایک سولر نیٹ میٹرنگ سسٹم میں, اس کا 3 سے 3.5 سال کے اندر پے بیک پیریڈ ہوتا تھا. اس کی انویسٹمنٹ یوز ٹو پے ہم اور ہر بیک ان 3.5 to 4 years. That period has shrunk to 18 to 24 months right now. What is the realistic figure according to which we could not ever think of disincentivizing this policy and also continuing a healthy growth of it? We are responsible policy makers. یہ آج کی خبر 1 آ گئی اور 2 آ گئی اور on the basis of just presumptions. So thank you. As long as you are not privileging an aging and inefficient grid. No. And captive power. بالکل ابھی میں آپ کو دوں گی محسن صاحب. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر پالیسی, لیکن آپ کال اٹینشن پہ نہیں بول سکتے سینیٹر, آپ کال اٹینشن پہ نہیں بول سکتے. اگر ہم نے ان دا فیوچر آج سے مہینہ بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد, دس از اے ڈائنامک سیکٹر, اس کی اپنی اس کی کوالیفیکیشنز ہیں مختلف. آپ کا فیول مکس ہے, آپ کا ٹرانسمیشن مکس ہے, آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. ہر چیز کے اندر آہستہ آہستہ جس طرح ہم گرو کریں گے, جب ڈائنامزم ریکوائر کرے گی, جب ہمارا سیکٹر ریکوائر کرے گا, اس پالیسی کا اگر ریویو ہوگا کسی سٹیج کے اوپر بھی, تو وہ ایک رسپانسبل طریقے سے سٹیک ہولڈرز اور سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد ہوگا. تو لیٹ می اشور دا ہاؤس دس اباؤٹ دس اگین, دیر از نو such policy that has been introduced that is going to change any conditions of any net metering owner or the distribution companies that has happened so far. And until we do that, we will, whenever we do that, we'll do it in a very transparent manner. شکریہ منسٹر صاحب.